facing the problem with the base or the good makeup techniques, or somewhere you are lacking in the makeup, hi, I am Diksha Budhiraja. I am a professional makeup artist and an educator. So welcome to my YouTube channel. Here I'll be teaching you how to do makeup, some makeup tutorials, makeup tips. We'll go with the dramatic makeup look, so much more about the products, product reviews and everything. So before any further ado, let's get into the video. Also, if you haven't subscribed my channel yet or haven't hit that like button below, please do it. And now let's get started. Basically, for the hydration step, I've already done the cleansing. For the hydration base, I always use a makeup fixer. This is from BSc Micro Finish Makeup Fixer. I use this before my makeup just for the hydration. Especially in winters, we have a dry skin, so that gets more dry. So I always prefer some hydration before I get into the makeup. My first step will be makeup fixer, which I am using as a hydrator. Next, I'm using this Biotica moisturizer. I'm putting the lenses right now, and I'm using Dark lenses. So that's how it looks on me. Now, without any further ado, let's get started with the base. The color correction part, for my pigmentation, I'm using 2 shade darker concealer that must go as a corrector on my face. My skin pigmentation, I'm using sand shade from Too Faced. So basically, जितनी भी मेरे face पे pigmentation है, I'll cover it up with this only. मैं कोई भी color corrector नहीं use कर रही हूँ, ठीक है, just to avoid too much of layering on my face. मेरे फेस पे जहाँ जहाँ भी पिगमेंटेशन है, आई एम कवरिंग इट अप विद द टू फेस डार्क कंसीलर. यू कुड सी मैंने हर जगह अप्लाई कर लिया है. नाउ विल ब्लेंड इट विद द ब्लेंडिंग. दिस इज फ्रॉम PAC 219. आई एम जस्ट dabbing and dabbing. I am not swatching the product. Now I am moving up with the next step, that is a foundation. I am using this brush from Pro Art. You could see this is something flatten, है ना. I'm using this brush from Pro Art, that is PF66. For foundation, I'm using NARS ka foundation because that gives a little sheer coverage. We love something like no makeup looks, so I always prefer sheer foundation instead of full coverage foundations. Till now, I have completely applied every product with the brush. Now I am taking a beauty blender. Make sure जो भी beauty blender आप use कर रहे हो ना, that is this soft. ठीक है, somewhere जब भी हमारा beauty blender is not soft, hard beauty blenders हम use करते हैं, तो mostly सारा product वो absorb कर लेते हैं. ठीक है, so these beauty blenders ना client को feel होता है और ना ही हमारा फालतू का product absorb करता है. The next step, I am using a powder to set my base. So I am using Laura Mercier. To avoid under eyes creasing, तो सबसे पहले what you guys have to do is ना, look up and use the beauty blender. ठीक है, once you have used the beauty blender, तो creases हट गए. Now if you will apply the powder ना, this will stay the same. But अब मैंने नीचे देख के I'll apply the powder, again creases आ गए. तो powder लगाने से पहले blend it and then apply a powder. Here I'll blend it, and next I'll do is I'll apply the powder to lock it over here that I don't get creased. And same I'll do with this eye. Every time I do a powder on my face, उसके बाद I make sure I spray this basically the makeup fixer. जब भी मैं पाउडर अप्लाई करती हूँ, I make sure कि मैं makeup fixer अप्लाई करूँ आफ्टर द पाउडर, कि जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है मेरी स्किन में वो सेटल हो जाए. Get this dry. And जब तक ये ड्राई होगा, I'll do my eyebrows. Like I already have so much filling in my eyebrow. मेरे को उसको बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखा रहा है. तो जब भी हमारे ऐसे थोड़े फुलर eyebrows होते हैं, what we have to do is हम लोग इसको पाउडर से ही सेट कर. Basically I am combing it
एंड इसको कॉम्ब करके आई सेट इट विद द पाउडर ओनली। जब भी हम आईब्रो सेट करने चलते हैं तो उसको हमेशा से पीछे से फिल करना स्टार्ट करना है एंड आगे तक लाते रहना है, ठीक है। एंड वंस यू रन कोम्ब इट। हमेशा देखा होगा तो आईब्रोज आगे से थिन एंड पीछे से थिक होती है। नेक्स्ट आई प्रोसीड विद द ब्लशर, बट मैं ना एक मेकअप का रूल ब्रेक करूँगी। दिस अ बेसिक मेकअप रूल कि लिक्विड प्रोडक्ट्स लिक्विड तक, पाउडर सेट होने के बाद पाउडर प्रोडक्ट्स, ठीक है। बट व्हाट आई वांट टू डू इज, मेरे को लिक्विड ब्लशेस बहुत पसंद है, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद देम। तो बेसिकली लिक्विड ब्लश जब हम भी पाउडर के ऊपर लगाते हैं तो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड फिट। आई एम यूजिंग नायर्स का ऑर्गेज़म ब्लश फॉर दैट पर्टिकुलर लुक। एंड हमेशा ना अप्लाई योर ब्लशेस इन अ लिफ्टर वे, ठीक है। अगर जैसे मेरा फेस ऑलरेडी चबी है, इफ आई एम गिविंग अ लिफ्टर लुक टू माई फेस तो दैट विल एनहांस माई लुक। और अगर यही मैं इसको थोड़ा फ्लैटन करके लगा लूँगी तो वो थोड़ा डाउनवर्ड दिखेगा फेस, और सामने कहीं ना कहीं वो थोड़ा और चबीनेस लुक दे सकता है। तो मेक श्योर हम इसे लिफ्ट करें। एंड आई लव द ब्लश लिटिल ऑन द नोज। बी अप्लाइंग बेनिफिट का ब्रॉन्जर टू स्कल्प्ट माई फेस टू गिव इट अ लिटिल स्ट्रक्चर। तो जब भी हमें स्ट्रक्चर देना है फेस को और हमें कंटोर करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज, सबको कंटोर में बहुत कंफ्यूजन होता है, दैट ईयर की स्टार्टिंग से विल मूव टूवर्ड्स द लिप, ठीक है। ईयर की स्टार्टिंग से विल मूव टूवर्ड्स द लिप और हम आईब्रो के आँख तक कंटोर करेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड विल ब्लेंड ओवर हियर, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर and we'll blend it in this particular direction. And next for the jawline, ये चीज़ हम कभी भी डाउनवर्ड्स ब्लेंड नहीं करेंगे, विल ब्लेंड इट अपवर्ड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यू कुड सी द डिफरेंस कि मेरा ये वाला साइड यू कुड सी कि स्ट्रक्चर्ड दिख रहा होगा एंड दिस साइड इज स्टिल द राउंड। लुक, you guys could see the difference. Let's move towards the eye makeup. So what I am planning to do a proper blue under eye, and next with the topper of brown eyeshadows, I am planning to give a peachy look over above here on the eyelids, and the blue eyeshadow, everything, the blue smudging, blue under eyes properly over here. Okay, we'll do the same process over here. Okay, we'll go round in and round out. हमें जब भी ब्रश को होल्ड करना है ना तो हमें इसे पीछे से होल्ड करना है। वी डोंट होल्ड द ब्रश लाइक अ पेंसिल। ब्रश हम हमेशा पीछे से होल्ड करते हैं क्योंकि जितना लाइट प्रेशर होगा उतना स्मूथ हमारा ब्लेंडिंग होगा। ओके, so this looks something like that. Add a little darker shade to just give the depth to my eyes. I'm going in a little bit of browns right now. Okay. If you could see that, same I'll do this on this side. Add a little pop of shimmers. Shimmers I always apply with the finger because जो फिनिश फिंगर से आएगा वो किसी ब्रश से नहीं आएगा फॉर शिमर्स। My eyes are quite watery, so I have already done this blue liner thing. So now next part is smudging this. So I'm smudging this blue eyeliner to give that intense look. I am absolutely loving how this particular blue liner thing is looking on me. If sometimes your client asks कि उसको blue color में कुछ चाहिए on eyes or कुछ, always suggest them either take a blue liner, either take a blue under eyes instead of going with the whole blue eye something. ठीक है, that things looks more dramatic if I could say.
I don't particularly, personally, I don't like it. If someone likes it, you can do it, but mostly prefer or ask someone that if they are comfortable with the blue liners, or if they are comfortable with the blue kajals or something. That's how my eyes looks right now. And now we'll go with the lashes. This looks sharper. I'm using a concealer and typically this types of angular flat brushes just to give this more flatter and a sharper look. If you could see, looks more lifted. Same, I'll repeat this side. So I'm using this one from Swiss Beauty. This is dark chocolate 12. And that's how a lip liner looks on me. Little concealer on my lip just to give that ombre lip effect. We'll blend it off. And next we'll go with the gloss. That's how it looks. The most important part and my favorite part, the highlighter. We'll do the highlighter next. Here is the highlighter. I'm using the highlighter from Dior. And that's how the final look looks like. Wait, we are missing the mascara. Let me add that. I'm using this particular mascara from Maybelline, and I absolutely love the mascaras. That's how the final look looks like. Let me do my ears and then I'll show you how it looks like. So that's how the final looks like. And I'm coming up with my online makeup masterclass on 8th of January and also a 3-day makeup masterclass. And if you want any of details regarding the course, regarding the class, you can check the number below on Instagram, or you can text me on WhatsApp. My team will contact you and will share every detail with you. So what are you waiting for? Enroll yourself today. You'll get to learn more and more about the makeup. If you haven't done or subscribed my channel yet, please do it. Would be posting regular makeup tutorials for you all. Till then, bye bye. Love you.